हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक हमने लर्निंग पाथ में मल्टीपल मॉड्यूल्स को पढ़ लिया है, जैसे कि क्रिएट अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप विद .NET MAUI, create a UI in .NET MAUI app by using XAML, customize layout in .NET MAUI XAML page, create UI that uses data binding in .NET MAUI, designing an MVVM view model for .NET MAUI। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। यदि आपने अब तक ये सब मॉड्यूल नहीं पढ़े हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस लर्निंग पाथ में स्टार्टिंग से इसे पढ़िए, तो बेसिक आइडिया हो जाएगा कि .NET MAUI क्या है, कैसे एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, व्हाट इज़ द प्रीरिक्विजिट फॉर रन द .NET MAUI एप्लीकेशन। अब हम कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिज़ाइन consistent .NET MAUI XAML pages by using shared resources. Okay, so learn how to use shared resource and styles. मेन फोकस है रिसोर्स इन स्टाइल में, जो कि यू कैन सी इनसाइड द रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर के अंदर होता है स्टाइल, स्टाइल में होता है कलर्स डॉट जैमल, स्टाइल डॉट जैमल। ठीक है, इन .NET MAUI एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यूजिंग द सेम fonts and color across your entire UI creates a consistent look and feel। ठीक है, .NET multi-platform app UI provides a way to define these values in one place and look them up everywhere they are used। तो हमें क्या करना है कि कलर्स को एक प्लेस में इकट्ठा लिख लेना। तो आप लिख सकते हो कि जैसे कि आपने एक एम्प्लॉय पेज बनाया, एम्प्लॉय पेज में आपके पास लॉगिन बटन है, तो लॉगिन बटन के लिए आप कौन सा कलर रखना चाहते हो सकता है हर बटन के लिए सेम कलर है पूरे ऐप में, तो आप लिख सकते हो बटन कलर। तो इस प्रकार से आप एक टैग क्रिएट कर सकते हो और जिसको आप कहाँ लिख सकते हो, कलर्स डॉट जैमल के अंदर। ओके, reusing values guarantees consistency across your app and makes update simple। जैसे कि हमने एक टैप कैलकुलेटर बनाया सपोज, सो sorry tip calculator। So app is used in hospitality industry and allows attendants to quick calculate and gratuity for any service। Your company recently changed the looks of its corporate print। Your job is to update the app's UI to match the new look। You need to change the fonts, text color, background color। You want to make this kind of update easy because there are sure to be more branding changes as your company grows। In this module, you learn how to define and apply a resource both in code and extensible application markup language। You also see how to group multiple settings into a style so you can apply them all at once। कहने का मतलब ये है कि कल को कंपनी ने बोल दिया आई डोंट वांट दिस कलर, सो यू कैन मेक इट समथिंग रेड कलर हियर। ओके, आप यहाँ रेड कलर रख लो, तो आपको ये प्राइमरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू चेंज द प्राइमरी कलर, कीवर्ड सेम रहेगा। तो इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट और यूज़ करते हैं स्टैटिक रिसोर्स को XAML के अंदर। क्रिएट एंड यूज़ डायनेमिक रिसोर्स, यहाँ दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक, वो समझेंगे। क्रिएट अ कंसिस्टेंट यूज़र इंटरफेस बाय यूजिंग स्टाइल। क्रिएट एंड यूज़ एप्लीकेशन वाइड रिसोर्सेस। अप्लाई यूज़र एक्सेसिबिलिटी चॉइसेस बाय यूजिंग बिल्ड इन स्टाइल। ओके, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट यूनिट, डिफाइन एंड यूज़ रिसोर्सेस। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है किसको, रिसोर्स को। अ रिसोर्स इज लाइक अ symbolic constant from a programming language।
You define it in one place and reference it everywhere you need it. Your code is easier to read because you use a descriptive name instead of magical value. करेक्ट. हमें डायरेक्ट कोई नंबर नहीं लिखना है कहीं पे भी. जैसे कि लेट्स सपोज विल गो टू द पेज. पेज के अंदर मूवी डिटेल्स पेज है. अब जैसे ये पेज में यदि मैंने यहाँ बैकग्राउंड कलर लिखा है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एज योर ब्लू. ओके, मैंने ब्लू कलर डाल दिया, या मैंने लिख दिया 453 और इसके सामने कुछ कैपिटल एफ लगा दो, दैट इट्स बिकम वन कलर. तो ये मैजिकल वैल्यू नहीं लिखनी है हमें. हमें मीनिंगफुल वर्ड्स लिखना है कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया है. बैकग्राउंड कलर, टाइटल किस से रिलेट करता है, ये किस चीज़ का टाइटल है. जैसे ये मूवी टाइटल है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक लिख सकते हैं मूवी टाइटल कलर, और इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, रिसोर्स के अंदर. रिसोर्स के अंदर कलर्स के अंदर विल टाइप हियर कलर, मूवी कलर, कॉलन की मूवी टाइटल कलर. तो यदि अभी चेक करेंगे बैक टू दिस XAML, यहाँ पे क्या आ रहा है, कलर आ गया. राइट. तो ये हो गया स्टैटिक रिसोर्स जो चेंज नहीं होगा. डायरेक्ट आप इसको रेफरेंस को कॉल कर सकते हो. तो पढ़ते हैं आगे. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि योर कोड इज़ ईजियर टू रीड. तो मूवी टाइटल कलर एक मीनिंगफुल नेम है. इंस्टेंट ऑफ जस्ट पास द कलर नेम. ओके, just pass the color name. So your code is easier to read because you use a descriptive name instead of magic value. If you need to change the value, you need to update the definition. In this module, you see how to use resource to eliminate hard code values from extensible application markup language that you use in .NET multi-platform app UI. तो resource क्या है? What is resource? A resource is any object. Okay. A resource. What is resource? What is resource? A resource is an object that can be shared across your UI. The most common example are fonts, color, sizes. However, you can also store complex objects such as style and on-platform instance as resources. You define a resource in either XAML or code. Then you apply it in either XAML or code. Typically, you work entirely in XAML, although we show you a few cases later where code is useful. Consider an example. Suppose you want to use the same text color values across the controls on a page. If you use the hard code values, your XAML would look like the following. Notice how the values for the text color is repeated in the two controls. लेट्स सपोज हमने एक लेबल लिया, उसका टेक्स्ट कलर डाल दिया ब्लू, फॉन्ट साइज 14. सेम फॉर द बटन. इंस्टेंट ऑफ रिपीटिंग द टेक्स्ट कलर, you can define it a resource. The definition looks like in XAML is color x colon key is equal to page control पेज, क्योंकि ये कंट्रोल कहाँ पे, पेज पे, तो पेज देन कंट्रोल टेक्स्ट कलर ब्लू. अब जब भी हमें इसे यूज़ करना है टेक्स्ट कलर को, हम क्या यूज़ करेंगे. लेट्स सपोज गया रिसोर्स में, कलर के अंदर हमने एक नई फील्ड वैल्यू बना दी, पेज कंट्रोल टेक्स्ट कलर. नाउ बैक टू द पेज, इज द लेबल, दिस इज़ द लेबल. ठीक है, इस लेवल में हमने लिख दिया टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू
स्टैटिक पेज कंट्रोल टेक्स्ट कलर, जो कि ब्लू, या इसको लिख दो ब्लैक। ओके, ये हो गया ब्लैक कलर, करेक्ट। Notice how the defined element Notice how the defined element has an X key property that gives the resources a name. You use this key to look up the resources in your XAML. Before you can use a resource, you must store it in the resource dictionary. अभी resource dictionary किधर है? Resource dictionary होगा आपका app.xaml.cs में। दिस इज़ रिसोर्स डिक्शनरी। सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि मैंने यहाँ से हटा दिया तो ये काम नहीं करेगा, तो इन पाथ देना पड़ेगा। ये कहाँ पे? रिसोर्स, वेयर इज रिसोर्स, दिस इज रिसोर्स, देन स्टाइल्स, देन कलर्स डॉट XAML। सेम फॉर स्टाइल्स ऑल्सो, रिसोर्स, then styles, and then style.xaml. What is resource dictionary then? Resource dictionary is a .NET MAUI library class. Okay, .NET MAUI library class customized for use with your resources. It's a dictionary. Okay, it's a dictionary. हमने iResource dictionary को implement किया है. Okay, it's a dictionary. Resource, it's a dictionary, so it's store key value pairs. The type of key is limited to string, while the value can be any object. तो key हमेशा क्या होगा? String, और value क्या होगा? Object. Every .NET MAUI XAML page has a property named resource that can hold resource dictionary. The property null by default. Okay, the content dot page dot resources, right? We'll back to the page. Content dot page dot resources. Okay, अभी समझते हैं। तो रिसोर्सेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? ये ब्लैंक होगा, ठीक है। कंटेंट पेज, रिसोर्सेस, रिसोर्स डिक्शनरी, ये ब्लैंक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है? null by default. So you need to create a dictionary instance before you can use it. The following code shows how to would create a resource dictionary object and assign it to the resource property of content page. तो लेट सपोज मुझे एक रिसोर्स डिक्शनरी बनाना है जिसकी लिमिटेशन सिर्फ इस पेज तक है, तो उस कंडीशन में हम रिसोर्स डिक्शनरी सिर्फ पेज के अंदर बनाएंगे। यदि ग्लोबली बनाना है, सो डेफिनेटली यू हैव टू put here colors in style and call across the application. यदि लिमिटेड यूज़ है इसका, सिर्फ इसी पेज में चाहिए, तो यू कैन यूज़ इट हियर ऑल्सो. .NET MAUI XAML has a built-in convenience syntax that create the dictionary instance automatically whenever you start using resource property. Okay, the previous example can be simplified to the following code. तो इतना सब न लिखने की जगह पे हम डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं, यदि हमें इतना नहीं लिखने की ज़रूरत है अब आज की डेट में, ठीक है। ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह सिर्फ क्या लिखना है? resources is enough. We don't need to call anything. Content page dot resources, that's fine. Every page in your app can have its own dictionary. You use the page specific dictionary to store resources that are used exclusively on that page. Okay, एक और चीज़ है, each control on a page can also have its own resource dictionary. Let's suppose ये label है, right? So हमने label के अंदर label
डॉट रिसोर्सेस, हमने लेबल के अंदर एक लेबल डॉट रिसोर्स बनाया है, ठीक है, रिसोर्सेस, और उसके अंदर हमने स्टाइल, कोई भी स्टाइल हम रख सकते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे स्टाइल के बारे में. Apart from the layouts and views which can hold child elements, it's not common to add a resource dictionary at the control level. Creates a resource. To create a resource, you declare it inside the resource property for a page. The following example creates the text color resource described earlier. तो कंटेंट पेज डॉट रिसोर्स, ठीक है. अभी जब भी हमें क्या बनाना है, रिसोर्स बनाना है, दिस इज रिसोर्स, तो कंटेंट डॉट पेज, ओके, डॉट रिसोर्सेज के अंदर हम क्या लिख देंगे, कलर, ओके, फिर की वैल्यू डाल देंगे, मूवी टाइटल कलर, और उसको कलर दे देंगे, दैट्स फाइन, दैट्स बिकम वन रिसोर्स, और उसको हम यहाँ कॉल कर लेंगे, ठीक है. You can select the key for your resources, choose a name that reflects the use rather than the value. ऐसा नाम चूज करना है जो मीनिंगफुल हो, इंस्टेंट ऑफ कोई वैल्यू को ही आपने की बना दी, ऐसा नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, टू सेट द लेबल बैकग्राउंड टू रेड, डोंट यूज रेड कलर एज द की, यूज बैकग्राउंड कलर इंस्टेड. Okay. Apply resources by using static resource. Static resource is a markup extension. Okay, this is markup extension for looking up resource in a resource dictionary. तो जब भी हम स्टैटिक रिसोर्स लगाते हैं, राइट, यहाँ पे, तो वो क्या होता है, दैट इज मार्कअप एक्सटेंशंस, जो कि कंट्रोल डॉट XAML के अंदर होता है, ठीक है. ये इसका क्या काम है, आई मार्कअप एक्सटेंशन का, वो क्या फाइंड आउट करता है, की के बेस्ड ऑन पे वैल्यू को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द वैल्यूज़. तो हमने क्या पास किया है, दिस इज़ की. अब की पास करने से क्या वैल्यू निकल के आनी चाहिए, उसका कलर. सो स्टैटिक रिसोर्स क्या है, एक मार्कअप एक्सटेंशन है फॉर लुकिंग अप रिसोर्स इन अ रिसोर्स डिक्शनरी. You provide the key for the resources and the markup extension return the corresponding value. The following XAML markup shows an example that creates and uses a color resource named page color control text. ठीक है, हमने एक लिया था page control text color. Okay, the XAML markup for the label control in the example uses the static markup extension to retrieve the value. Okay, the extension is called static resource because the extension is evaluated only once. The dictionary lookup happens when the target object is created. The target property isn't updated if the resource value in the dictionary change. यानी का मतलब क्या है कि जैसे कि एक बार मैंने हिट कर दिया और यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा. ओके, static resource throws a runtime exception if key isn't found. Okay, one more thing is, यदि मैंने इस की को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे तो अभी कुछ दिखा नहीं रहा है, राइट. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये वैल्यू है, एग्जिस्ट करती है, बट जब आप रन टाइम, कंपाइल टाइम में एरर थ्रो नहीं करेगा, ये रन टाइम में एरर थ्रो करेगा. यू अंडरस्टूड. सो इट्स थ्रोज अ रन टाइम एक्सेप्शन. XAML intrinsic types. Let me reset that. Okay. XAML intrinsic types. The original example presented at the start of the unit sets the text color property and font sizes. Okay. But the font size property has the type double. To create a resource for this value, you use one of the XAML intrinsic types defined in the XAML specification. The XAML specification defines the types named by many of C# simple types. The following code shows the example sources for each of the intrinsic type. So content or resource x colon string hello,
So this is the values you can use it. सेट द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वैल्यूज़ फॉर रिसोर्सेज। तो जब भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वैल्यू आती है तो हमें क्या यूज़ करना है, ऑन प्लेटफॉर्म के यूज़ करना है। So it's common to need to adjust your app UI slightly between platforms. The standard way to define the platform specific values is by using an on-platform object when you define resources. For example, the following code shows how to create a resource that reference different text color on iOS, Android, and macOS and Windows. So content page.resources on platform को ऑब्जेक्ट को हमने यूज़ किया है जिसकी की है टेक्स्ट कलर, टाइप आर्ग्यूमेंट से कलर्स। ऑन प्लेटफॉर्म्स ऑन प्लेटफॉर्म के अंदर में हमने टैग यूज़ किया ऑन, और प्लेटफॉर्म है iOS, उसकी वैल्यू सिल्वर। मतलब जो टाइप आर्ग्यूमेंट्स है वो कलर है और कलर को हमें चेंज करना है, ठीक है। उस तो हमने क्या किया है कि यदि iOS होगा तो सिल्वर, एंड्रॉयड होगा तो ग्रीन, विन यूआई मतलब विंडोज़ येलो, मैक कैटलिस्ट होगा तो पिंक। ये सब हमने कहाँ लिखा है, बाय यूजिंग एन ऑन प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, अब जब भी इसको कंज्यूम करना है तो क्या लिखना है, सिर्फ इस की को पास करना है, किसके साथ, स्टैटिक रिसोर्स के साथ, क्योंकि स्टैटिक रिसोर्स मार्कअप है और वो की और की एज अ स्ट्रिंग लेता है और रिटर्न में वैल्यू रिटर्न करता है विच इज़ ऑब्जेक्ट, इट माइट बी एनीथिंग। तो लेबल टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू स्टैटिक रिसोर्स टेक्स्ट कलर हमने फाइंड किया। अब क्या होगा, जब भी ये हिट होगा, यदि मैं iOS में रन कर रहा हूँ तो ऑन प्लेटफॉर्म सबसे पहले क्या चेक करेगा कि प्लेटफॉर्म क्या है, iOS है तो सिल्वर रिटर्न करेगा। द वैल्यू टू विच static resource refers is assigned to a variable. What happens, the value changed, so it will throw the exception. Okay, so just one, a value to which a static resource refers to assign the value. What happens when the value change? Nothing. The lookup only occurs when any further changes in the backing dictionary aren't reflect. Okay, correct. The static resource is only evaluated once the target property value is being set. So this is the answer. Use page label resources. यूज़ पेज लेवल रिसोर्सेस। पेज लेवल पे कैसे यूज़ करना है, तो ऑल द एक्सरसाइज इन दिस मॉड्यूल रिलेटेड टू प्री बिल्ट टिप कैलकुलेटर ऐप एग्जांपल। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन द स्टार्टर सॉल्यूशंस। ओके, सो ये एप्लीकेशन हमने बनाया था टिप कैलकुलेटर, राइट। तो उसमें क्या होता है कि टिप कैलकुलेटर की यदि बात करूँ तो ग्रिड, गो बैक टू दिस एप्लीकेशन, टिप कैलकुलेटर हमने रखा है अभी भी, ठीक है। तो लेबल है, राइट। तो बिल लेबल होगा या लेआउट रूट है क्या कहीं पे, नहीं है, तो इसका नाम देते हैं x कॉलन नेम इज इक्वल टू, क्या दे देते हैं इसका नाम, लेआउट रूट। ओके, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको सिल्वर, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू सिल्वर। ओके, टिप कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल में जाके लिख देते हैं टिप कैलकुलेटर, यहाँ पे भी टिप कैलकुलेटर, यहाँ पे लिख देते हैं टिप कैलकुलेटर, इसको भी टाइटल रहे टिप कैलकुलेटर। लेट मी रन दिस, सेलेक्ट एंड्रॉइड डिवाइस, ठीक है, ले लेते हैं, रन करते हैं।
Okay, one error. Okay, we have some issues with app.xaml calculator. Okay, okay, here is the problem. टिप कैलकुलेटर इसे मिल नहीं रहा है एक्चुअली. सो प्रॉब्लम क्या है इस पेज में? टिप कैलकुलेटर डॉट xaml. दिस इज xaml नॉट पेज. लोकल में हमने क्या डाला? पेजेस. पेजेस के अंदर नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं मिल रहा है. टिप कैलकुलेटर पेज नहीं है हमारे पास, जस्ट टिप कैलकुलेटर. ओके, एप्लीकेशन चल पड़ा है. तो हमने क्या किया है, इसका बैकग्राउंड कर दिया है सिल्वर कलर. ठीक है, एक बार सैम्पल देख लेते हैं. सिल्वर है, इसको रेड करें तो रेड हो जाएगा. ठीक है, परफेक्ट. तो हम क्या देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर को हमने रेड किया. बैक टू दिस वेबसाइट. ओके, अब क्या हो रहा है कि लेफ्ट कॉलम इज इक्वल टू स्टैटिक लेबल्स. ये सभी स्टैटिक्स है, ठीक है. टेक्स्ट कलर. अब क्या करना है, सबसे पहले रिसोर्स को डिफाइन करना है. तो रिसोर्स का हमने कहाँ डिफाइन करना है? कंटेंट पेज में पहले करते हैं. ठीक है, विल गो विथ कंटेंट पेज. तो कंटेंट पेज में करते हैं कैसे? कंटेंट पेज डॉट रिसोर्सेस, राइट, देन रिसोर्स डिक्शनरी एंड देन दिस. अब इस कलर को हम कहाँ पास कर देंगे? यहाँ पास कर देंगे बीजी कलर करके. तो बीजी कलर करने से क्या हो गया? ये यहाँ पे चेंज हो गया. ये एफ जी कलर करूँगा तो एफ जी कलर हो जाएगा, राइट. तो ये क्या हो गया? हमारा डेडिकेटेड रिसोर्स है अंडर द पेज. यदि मैं चाहता हूँ ये ग्लोबल हो, ठीक है, बैक टू दिस फर्स्ट. और इसको कंज्यूम करने के लिए क्या चाहिए हमें? यूज़ स्टैटिक रिसोर्स. तो स्टैटिक रिसोर्स कॉल करके हम उसे कंज्यूम कर लेंगे. क्लियर है? यूज़ एंड अपडेट डायनेमिक रिसोर्सेज. अभी आ रहा है डायनेमिक रिसोर्सेज. उससे पहले एक नोट लिखा था इसमें, उसको एक बार पढ़ लेते हैं. क्या है? डोंट वरी अबाउट द स्टाइलिंग ऑफ कस्टम the page or the light and dark themes. At this point you address this issue later. Okay, हम बात करेंगे थीम्स में आने वाले पेजेस में. या यूज़ एंड अपडेट्स डायनेमिक रिसोर्स. तो क्या है कि देर आर सम केसेस वेयर स्टैटिक रिसोर्स इजेंट एप्रोप्रिएट. अब वो केसेस क्या हैं? सपोज यू वांट टू इम्प्लीमेंट कलर थीम्स that let the color user change the look of the app at runtime. The statics markup extension does the dictionary lookup only once, so it can not update the UI dynamically. You store user preferences on a web server and load them when the application starts. The start resource markup extension throws an exception if the key isn't found in dictionary. How to update resources at runtime? You store resources in resource dictionary. You can
write code to update these resources at runtime. You can even add new resources or remove existing resources, like a content page.resource colors x colon key panel background color blue. ओके, अभी हमने क्या किया, रिसोर्स के अंदर ये कलर लिख दिया. सपोज यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ panel background color resource while application running. You can add code to the code behind file for the page and access the resource property. The following example updates the resource value from the previous example. अभी क्या करना है, जो पैनल बैकग्राउंड कलर लिखा है, ठीक है, इसको हमने कोड बिहाइंड से चेंज किया. लेट्स सपोज इसका कोड बिहाइंड क्या है, XML टिप कैलकुलेटर XAML.cs. इसको मैंने यहाँ से कॉल कर दिया इनिशियलाइज होने के बाद. दिस डॉट रिसोर्सेस, उसके अंदर में की पास किया पैनल बैकग्राउंड कलर और कलर को पास कर दिया. तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो गया. देखते ही होता है कि नहीं, पहले देख लेते ये है कि नहीं, कहीं पे लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है. तो इसको बनाते रहते हैं सिंपल, ठीक है. रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को. बैकग्राउंड कलर ग्रीन आना चाहिए, बट क्या हुआ, ग्रीन नहीं आ रहा है. ठीक है, यदि मैं इसको डायनेमिक कर दूँ तो आ गया, यदि मैं इसको स्टैटिक कर दूँ तो नहीं आएगा, क्योंकि स्टैटिक सिर्फ एक बार हिट होता है और उसी समय ही अपडेट हो जाता है. फिर उसके बाद कोड बिहाइंड में गया होगा कर्सर, कोड बिहाइंड में उसे ग्रीन मिला, और ग्रीन होने के बाद, ओके आई विल टेल यू अगेन, इनिशियलाइज कंपोनेंट मतलब जैमल अपडेट हुआ. फर्स्ट हो जाने के बाद उसे सिल्वर कलर मिला. जब वो इनिशियलाइज कंपोनेंट किया तो सिल्वर था. फिर हमने इसको डायनेमिकली चेंज किया, बट वो डायनेमिकली चेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्या था, मार्कअप एक्सटेंशन क्या था, रिसोर्स, स्टैटिक रिसोर्स था. फिर से देख लेते एक बार, ठीक है. एप्लीकेशन हिट हुआ, यहाँ इनिशियलाइज कंपोनेंट में आया. इनिशियलाइज कंपोनेंट में आने के बाद क्या हुआ कि उसे ग्रे कलर मिला, बट बल्कि ये लाइन भी एग्जीक्यूट हुई उसके बाद, बट ग्रीन नहीं हुआ, ओवरराइट नहीं हुआ कलर. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टैटिक रिसोर्स, यहाँ पे हमने स्टैटिक रिसोर्स का यूज़ किया है. अब मैं क्या करूँगा, इसको डायनेमिक लिख दूँगा. डायनेमिक रिसोर्स जैसे ही टाइप करूँगा ये चेंज कर देगा. यू अंडरस्टूड. तो डायनेमिक रिसोर्स कब यूज़ करना है, जब हम रन टाइम में कलर वैल्यू को चेंज करते हैं. ठीक है, दिस इज़ द मेन डिफरेंस. सो डायनेमिक रिसोर्स क्या है, डायनेमिक रिसोर्स इज अनदर मार्कअप extension for looking up resources in resource dictionary. It's similar to the static resource in that it does a dictionary lookup when the target object is created, but it also listens for changes to the source in the dictionary. If the source value in the dictionary changes, dynamic resource automatically updates in the UI. एक चीज़ और कर लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने कोड बिहाइंड से कलर उड़ा दिया, कमेंट कर दिया. इसको फिर से रन करते हैं. क्या होगा इस केस में, इस केस में ग्रे कलर आना चाहिए, राइट, सॉरी सिल्वर कलर आना चाहिए. आया सिल्वर. अभी एक चीज़ और करता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ रेड. ठीक है, यहाँ इसको लिख देता हूँ रेड. देखिए रेड भी हो गया. इसको लिख देता हूँ ग्रीन. तो ये डायनेमिकली चेंज करते जा रहा है, डायनेमिक. तो डायनेमिक यहाँ से भी चेंज होगा, वो पीछे कोड बिहाइंड से भी हुआ. ठीक है, तो डायनेमिक का मेन मकसद क्या है, रन टाइम में कलर चेंज यदि हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो वो इसको पिक कर लेगा. ठीक है. If the resource value is in the dictionary change, dynamic resource automatically updates the UI.
Dynamic resource has an advantage over static resources. If the dynamic resource can't find the color in dictionary, it leaves the property unset. कैसे मतलब? यदि मैंने इसको उड़ा दिया तब क्या होगा? ओके, यदि मैंने इसको कर दिया ब्लैंक फिर क्या होगा? ब्लैक कलर हो गया पूरा. क्रैश नहीं हुआ, ब्लैक कलर हो गया. So properties unset. Unlike static resources, a missing key isn't an error. It does not throw an exception. कुछ नहीं होगा, एरर भी थ्रो नहीं करेगा, एरर भी नहीं देगा. The nature of dynamic resource markup extensions imposes a small performance penalty on your application. Oh, the nature of the dynamic resource markup extension imposes a small performance penalty on your application. Although you can use dynamic resource in place of static in your XAML, if a resource doesn't change, then you should reference it with the static resource markup. So make sure जब भी आप dynamic resource use करते हो, right, और static resource, तो हमेशा याद रखना कि डायनेमिक रिसोर्स थोड़ा सा हैवी होता है, राइट. इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं आई मोड से क्या डिफरेंसेस है. तो लुकअप टाइम डायनेमिक रिसोर्स का रन टाइम पे है और ये पार्सिंग एंड लोडिंग के टाइम स्टैटिक रिसोर्स यूज़ होता है. रन टाइम्स अपडेट डज नॉट अपडेट इफ द रिसोर्स चेंज. स्टैटिक में डायनेमिक अपडेट ऑटोमेटिकली व्हेन द रिसोर्स वैल्यू चेंजेस. परफॉर्मेंस स्लाइटली फास्टर. स्टैटिक रिसोर्स का स्लाइटली फास्टर क्योंकि वन टाइम लुकअप है, और डायनेमिक रिसोर्स स्लाइटली स्लोवर क्योंकि मेंटेन्स लिंक्स टू द की. स्कोप रिक्वायरमेंट रिसोर्स मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूजिंग XAML. स्टैटिक का क्या है कि रिसोर्स मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए, रिसोर्स डिफाइन होना चाहिए बिफोर यूजर XAML. डायनेमिक रिसोर्स में क्या है, रिसोर्स कैन बी डिफाइंड लेटर और चेंज्ड एट एनी पॉइंट. कॉमन यूज केस क्या है, स्टैटिक रिसोर्स फिक्स्ड branding, constant or fonts. Dynamic resource theming uses selected colors. Okay. Static resource is resolved once when the page is loaded, like reliability and best for values that will never change while the app is running, such as company primary logo, color, and standard margin. Dynamic resource maintains a live link to the resource dictionary. Okay, so that's all about the static and dynamic resources. Knowledge check. What features does a dynamic resource provide that static doesn't? Dynamic resource throws an exception. No. It listens for change in backing dictionary and updates the user interface on change. Yes. Dynamic resource is an extensions for looking up values in dictionary, but it propagates any changes in those values to the user interface. Okay. Next unit is use dynamic resources to update elements. Use dynamic resources to update elements. In this exercise, you use the dynamic resource markup extension to update tip calculator UI when resource value change. तो होना क्या है, यहाँ पे एक XAML पेज बनाया है इन्होंने, स्टैंडर्ड टिप पेज, और उसमें 2 इवेंट हैंडलर्स बनाए. ठीक है, क्या बनाया है देखते हैं. एक है प्राइवेट कलर, कलर नेवी इज इक्वल टू कलर नेवी. ओके, एक बनाया है, दूसरा फील्ड है कलर सिल्वर जिसमें कलर सिल्वर पास किया. ऑन लाइट ये इवेंट हैंडलर है. जब भी इवेंट हैंडलर हिट होगा तो हम क्या कर रहे हैं, कोड बिहाइंड से कलर बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, अंडर द इवेंट हैंडलर्स. ठीक है, अब जब भी हाउ द कोड अपडेट्स द कलर फॉर ईच कंट्रोल इंडिविजुअली रिजल्टिंग द रिपीटेड कोड. और ये देखा जाए तो यहाँ पे कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कलर सिल्वर कलर सिल्वर कलर सिल्वर. ठीक है, अपडेट द रिसोर्स फ्रॉम द कोड. हम क्या करेंगे, रिमूव ऑल द कोड फ्रॉम द ऑन लाइट. यहाँ पे 2 इवेंट बनाए, ऑन लाइट एंड ऑन डार्क. ये लाइट है तो सिल्वर, डार्क है तो नेवी. ठीक है,
just opposite. Remove all the code from the onlight method. Add the following code on the online method. कौन सा कोड? एक रिसोर्स लिया जिसमें मैंने की पास किया फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड. ओके, सो एफ जी कलर नेवी, बैकग्राउंड कलर सिल्वर. ऑन लाइट में सेम फॉर डार्क, एफ जी कलर अपोजिट कलर सिल्वर एंड बैकग्राउंड कलर नेवी. दो वर्ड यूज़ किया. अब एफ जी कलर को हमने क्या किया हुआ है, रिसोर्स डायनेमिकली चेंज होता है. अपडेट द यूआई डायनेमिकली. ठीक है, अभी जब कोड जैमल में जाएंगे वहाँ हमें क्या लिखना होगा कि डायनेमिक रिसोर्स बीजी कलर बैकग्राउंड, डायनेमिक रिसोर्स एफजी कलर. ठीक है. डोंट चेंज द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टैटिक्स टू डायनेमिक. ओके, फॉन्ट साइज वो सबको नहीं चेंज करना है, सिर्फ इसको. अब जब भी इवेंट हिट होगा, कौन सा इवेंट? ऑन लाइट का. तो हम क्या कर रहे हैं, की तो सेम है बट वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं. ठीक है, सो ऑन लाइट किया तो एफ जी कलर में आ जाएगा नेवी. यदि ऑन डार्क हिट हुआ तो एफ जी कलर बन जाएगा सिल्वर. सो की इज सेम, only the value will change based on the event handler. Okay. राउंड अप. ओके, अभी राउंड डाउन एंड राउंड अप करके दो बटन है, राइट? तो उसमें हम कोड को तुरंत लिखने की कोशिश करते हैं. सो राउंड अप एंड राउंड डाउन, राउंड अप एंड राउंड डाउन. कैलकुलेट टिप है. ठीक है, यदि राउंड डाउन किया तो इस पर हिट होता है, राउंड अप किया तो इस पर हिट होता है. दोनों के लिए की लिख रखा है. ठीक है, एक ही इवेंट हैंडलर बनाया इसलिए. टिप परसेंटेज स्लाइडर, उसके अंदर कैलकुलेट यूज होता है. ठीक है, ओके, हम एक बना देते हैं फिलहाल के लिए. ऑन लाइट, ऑन डार्क, इसको क्रिएट कर लेते हैं, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं. क्रिएट हो गया ऑन लाइट एंड ऑन डार्क. क्या करेंगे, कलर उठाएंगे कौन सा, रिसोर्स का, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे. पैनल बैकग्राउंड कलर इसको कर देंगे हमारा फेवरेट कलर येलो. यदि वो लाइट है या सिल्वर ही रखते हैं, सिल्वर. या लेट्स डू वन थिंग, मेक इट येलो. डॉट यू येलो एंड इसको कर देते हैं ग्रीन. ओके, डार्क लाइट किया तो ग्रीन, डार्क किया तो येलो. ठीक है, डार्क किया तो ब्लैक कर देते हैं ना, ब्लैक. और लाइट किया तो सिल्वर, सिल्वर नहीं है, इसको रख देते हैं ग्रीन, ग्रीन येलो. ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं कोड को. कोड भी एंड में चेक कर लेते, होना चाहिए वैल्यू राइट. ठीक है, अब जैसे ही मैंने राउंड अप किया, राउंड अप के लिए हमने क्या लिखा है, डार्क लिखा है. और राउंड डाउन के लिए ऑन लाइट. ओके, चलो चलता है. राउंड डाउन मतलब ऑन लाइट हिट होना चाहिए. जैसे ही ये हिट होगा, कैलकुलेट में जा रहा है क्योंकि अभी ये कमेंट नहीं हुआ है. मेरी स्टार्ट,
राउंड डाउन हिट हुआ और प्ले किया तो ये हो गया आपका ग्रीन येलो। ऑन राउंड अप ब्लैक, राउंड डाउन green yellow, round down. Clear? So this is the dynamic change. Okay, let's stop this, comment this code, undo this code, comment this code, go back to this website. So don't change the font size, fine. From the static to dynamic उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट कलर को जो कि डायनेमिकली चेंज हो रहा है। क्रिएट अ कंसिस्टेंट यूआई बाय यूजिंग स्टाइल्स। अब आया स्टाइल्स। तो सबसे पहले हमने कलर समझ लिया, रिसोर्स समझ लिया, रिसोर्स डिक्शनरी समझ लिया। अब स्टाइल क्या होता है? इन डॉट नेट मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप UI resource are great for avoiding hard-coded duplicate values in your extensible markup language markup, but they can be tedious to apply. You assign each property value individually, which can result in cluttered and verbose XAML. This unit shows you how to group multiple settings into a style, which can help declutter your code and make it more maintainable. तो स्टाइल क्या है? How resources can you know clutter your XAML. A resource provides a value for a single property. Okay, resource provides a value for a single property. However, using lots of resources can lead to verbose XAML. Suppose you want a customized look for your buttons. You first create resource for the values that you need. Then you apply each resource to all the buttons. The following code shows how the XAML markup might look for two buttons. जैसे यहाँ पे एक बटन है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर विड्थ एंड टेक्स्ट कलर। हमने क्या किया, स्टैटिक रिसोर्स 4 बार यूज़ किया है, हाईलाइट कलर, बॉर्डर विड्थ, टेक्स्ट कलर। सेम आई एम डूइंग फॉर अदर बटन एज वेल कैंसिल के लिए। तो क्या है, ये टीडीएस है, काफ़ी टीडीएस लग रहा है, राइट? So this resource like a clutter, right? Notice how the same 5 properties, 1, 2, 3, 4, 5, are set on each of the buttons. Using resource removes the need for repeated hard-coded values in 4 of them. However, this type of XAML markup quickly gets hard to read. Additionally, if you are setting a large number of properties for each control, it's easy to accidentally omit one of them, leading to inconsistent in the appearance of controls. The solution is to create a style that assign all 4 properties at once. What is setter? Setter are the key components you use to create a style. Setters are the key components you use to create a style. A setter is a container for a property slash value pair. You can think of setter as a representing an assignment statement. You specify which property to assign the value to apply. You typically create a setter object in your XAML markup. The following XAML creates a setter object for the text color property. Okay, so setter is a container for a property slash value pair. So setter क्या करेगा कि setter के पास दो चीज़ें, एक है प्रॉपर्टी और एक है वैल्यू। दैट्स वाई इट्स अ कंटेनर। ठीक है, तो सेटर में हमने क्या लिखा है, प्रॉपर्टी का नाम लिखा है टेक्स्ट कलर और उसकी वैल्यू देती है वाइट। यू कैन यूज़ अ रिसोर्स फॉर द वैल्यू इन अ सेटर as shown in the following code. This technique is great when you want to use the same value with multiple setters. अभी सेटर एक और लिया है टेक्स्ट कलर, वैल्यू में डाल दिया स्टैटिक, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्टैटिक है, वन टाइम चेंज है, तो हमने उसका एक सेटर बना दिया। द प्रॉपर्टी वैल्यू दैट यू स्पेसिफाई इन सेटर मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ पाइंटेबल प्रॉपर्टी
All properties on the controls in the .NET MAUI that end with the suffix property are bindable properties. If you are trying to use a property such as text color in the setter, make sure there is a corresponding bindable property named text color property for that control. In practice, almost all the practice you want to use in your setters are implemented this way. What is a style? A style is a collection of setter targeted at a specific type of control. Okay, so what is a style? Style is a collection of setters targeted at a specific type of control. स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंट्रोल बटन के लिए हमने एक स्टाइल बनाया जिसके अंदर मल्टीपल सेटर्स को यूज़ किया. Notice that target type is set to button, and all the properties in the setters are members of the buttons. All the properties in the setter are members of button. You can't use this style for a label, okay, because the label class doesn't include the border color, correct. तो ये स्टाइल हम यूज़ नहीं कर सकते लेबल के लिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट ही नहीं है बॉर्डर कलर और या बॉर्डर विड्थ. डिफाइन स्टाइल. यू टिपिकली डिफाइन स्टाइल एज अ रिसोर्स. तो कंटेंट पेज डॉट रिसोर्स के अंदर जहाँ हमने कलर्स यूज़ किया था वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे स्टाइल. ओके. A resource dictionary makes it easier to use the style across multiple controls on the same page or over across your entire application. The following code shows how to define a style as a resource inside a dictionary. Notice that the style is given a naming using the x colon key property. Naming a style enables you to reference it from within your XAML pages. कंटेंट पेज डॉट रिसोर्सेस के अंदर में एक हमने बनाया स्टाइल which have a key and target type button, and inside we have a setter. Apply a style. So you attach a style to a control by assigning the name to the style property. The assignment causes each of the setter object in the style to be applied to the target control. The following code shows how to apply a button style to two buttons. Button text is equal to OK, style is equal to static my button style. Button text is equal to cancel style static resource my style button. In this previous example, okay, let me do that. So content page, back to the code. Okay, inside the resource dictionary, we'll remove this also, not required. Just put it here, style, and we use the label and close it. Okay, we can use a text color and we can close it. So we use the target type as a label. लेबल की जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज एंड कलर, फॉन्ट साइज को कर दिया 18 एंड टेक्स्ट कलर को कर दिया टेक्स्ट प्राइमरी कलर, और इसको बना दिया अभी स्टैटिक फ़िलहाल के लिए स्टैटिक रिसोर्स. एंड टेक्स्ट प्राइमरी कलर होगा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट प्राइमरी कलर की जगह हम लिख देंगे प्राइमरी कलर. प्राइमरी कलर है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट प्राइमरी कलर डू वी हैव और नॉट. सो we'll go back and go to the colors. Primary color, primary we have. Okay, so primary, that's it. You don't need to type primary color. अभी इसमें कलर आ गया. ठीक है, तो हमने एक स्टाइल बनाया लेबल. लेबल के अंदर सेटर है. सेटर क्या करता है कि जो प्रॉपर्टी है उसमें वैल्यू को सेट करता है. तो जब भी हमें लेबल यूज़ करना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे. अप्लाई ए स्टाइल, विल गो टू द लेबल, text is a bill, and we'll put the style style is equal to okay static resource label style. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबल स्टाइल. 1 मिनट,
यहाँ पे हमें लिख देना STYLE। तो ये हो गया लेबल स्टाइल और ये यूज़ हो गया यहाँ पे। गॉट इट। सो दिस इज लेबल स्टाइल। टिप कैलकुलेटर, something is off, I think. Style X, okay, X type is not there, that's why X type we have to, and my label style, okay, this should be label because target type is a label key value, and this value should come here. Okay, यदि मैं अब एप्लीकेशन को रन करूँगा तो आप देख सकते हो बिल का बिल जो लिखा हुआ है उसका कलर आ रहा है प्राइमरी में, और जो फॉन्ट साइज आ रहा है 18, मेक इट 24, थोड़ा और बढ़ाया है, मेक इट 34, सी। एंड वाई इट्स changing dynamically? Because okay, this is static values, this is under the statics. Okay, that's why it's changing. Okay, एंड डायनेमिकली कैसे करेंगे कि सिर्फ आपको क्या करना है कि डायनेमिक यूज़ करना है। कहाँ पे? बटन टेक्स्ट कैंसिल स्टाइल डायनेमिक रिसोर्स, कहाँ पे हुआ ये डायनेमिक रिसोर्स? यहाँ पे डायनेमिक रिसोर्स is also work. Now back to the code, make it red और make it प्राइमरी की जगह लिख देते हैं प्राइमरी। check in color.xaml, okay, it's changing in different color. Dynamic resource listens for replacement of the X key property in the resource dictionary. If you write code that loads a new style into resource dictionary with that same key value, the new style is automatically applied to your UI. Use an implicit style for multiple controls. Suppose your UI has 50 buttons and you want to apply the same style to all of them. With what we know so far, you have you had need to assign the style property on each button manually. It's not that hard to do, but it's still tedious. Okay, an implicit style is a style that you add to a resource dictionary without giving it an X key identifier. Implicit style are automatically applied to all controls of the specified target type object. जैसे कि कहने का मतलब ये कि जैसे बटन है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तो हर बार मुझे स्टाइल सब में जाके लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेंट ऑफ सभी के लिए लिखने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक स्टाइल बनेंगे, उसका टारगेट टाइप दे देंगे बटन, और जहाँ पे भी बटन यूज़ होगी और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, बॉर्डर कलर नेवी हो जाएगा। The matching of the implicit style to control requires an exact match to the specified target type. Okay, labels controls that inherit from the target type. अभी हम यहाँ करके देखते हैं, हमने यहाँ पे की नहीं लिखा, ठीक है, सिर्फ तो जैसे ही मैंने की हटाया, जितने जितने भी लेवल्स हैं राइट, सब में ये अप्लाई हो गया।
और जब मैं की लिखता हूँ तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेवल के लिए अप्लाई हुआ। व्हाट इट ओके। One more thing is apply to derived types. Apply to derived types is true. एक बार check लेते हैं. Apply to derived types where I have to write under the style. Okay, under the style. Okay, true कर दो इसका. We'll see what happen. और इस की को हटा देते हैं. सब में ये अप्लाई हो गया. चेंज क्या है इसमें? यदि अप्लाई टू derive, then nothing changes. ओके, समझना पड़ेगा इसको कि अप्लाई टू डिराइव टाइप्स. ओके, override a style. You can think of a style. Okay, okay, just to affect inherited controls, you can set the style dot apply to derived types attribute true when you define the style. For example, to apply a style to a button type, have it affect any your buttons that inherit from button, such as image button, radio button, or custom type that you create. You could use a style such as this. Okay, यदि हमने कोई नई बटन बनाई है, कस्टम बटन, जस्ट लाइक इमेज बटन, बाय इम्प्लीमेंट दी बटन्स, और हम चाहते हैं कि वो स्टाइल उसमें यूज़ हो, तो अप्लाई टू डिराइव टाइप्स को हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रू कर देना पड़ेगा. दैट्स ऑल. ओवरराइड स्टाइल. अब ओवरराइड स्टाइल व्हाट इज़ दैट? कि हमने एक स्टाइल बनाया है, अब वो उससे मुझे ओवरराइड करना है, तो ऑब्वियसली है मैंने बनाया था बटन विच इज़ स्टैंडर्ड. अब आई वॉन्ट वन मोर स्टाइल फॉर द बटन फॉर माई कस्टम बटन, तो मैं क्या करूँगा? एक और नया स्टाइल बनाऊँगा और टारगेट टाइप क्या यूज़ करूँगा? बटन यूज़ करूँगा. ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी मैं माई बटन स्टाइल यूज़ करूँगा एज अ स्टाइल, it will be override the previous value which is under the button target type. It will be take the latest style from the my button style. Okay, so that is called override style. Target an ancestor type. Suppose you want a custom background color for your buttons and labels. You can create separate style for each type, or you can create one style with target type set to visual element. This technique works because visual element is a base class for both button and labels. Okay, visual elements, I am talking about here visual elements. Okay, the following code shows a style that targets a base class that's being applied to two different derived types. So हमने एक स्टाइल बनाया है which has a name, which has a key is my visual element style. Target type is visual element. Okay, target type is visual element. Okay, setter बनाया background control. ठीक है, so this technique works because visual element is a base class of button and label. Visual element क्या है? is a base class of button and label. तो हमने क्या किया है? बटन और लेबल दोनों के लिए ही बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है यहाँ पे. तो जब भी विजुअल एलिमेंट जिसका भी पेरेंट होगा, जिसका भी बेस क्लास होगा, उसमें ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगा. ठीक है, हमने इसके लिए की बना दी. की यदि हम पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए अप्लाई हो जाएगा विजुअल एलिमेंट. ठीक है, यूज बेस्ड ऑन टू इनहेरिट फ्रॉम अ स्टाइल. सपोज यू वांट टू क्रिएट अ cohesive look for your UI. You decide that all controls should use a consistent background color. The background color setting is likely to appear in more than one of your styles. The background code shows two styles with a repeated setter. जैसे my button style target type is button, my entry style target type is, और दोनों के लिए background color मैंने क्या लिखा है? ब्लू लिखा है. ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ? यू कैन यूज स्टाइल इनहेरिटेंस टू फैक्टर आउट द डुप्लीकेट सेटर इनटू अ बेस स्टाइल. ये डुप्लीकेट सेटर है यहाँ पे.
अब मैं चाहता हूँ उसको बेस स्टाइल में कन्वर्ट कर दूँ. टू क्रिएट अ डिराइव्ड स्टाइल, सेट इट एज अ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टू रेफरेंस द बेस स्टाइल. The new style inherits all the setters from its base style. The derived style can also add new setters or replace an inherited setter with one that contains a different values. The following code shows the styles from the previous example reflected in hierarchy. The common setters appears only in base style rather than being repeated. Notice that you use the static resource markup extensions to look up the base style. You can't use dynamic resources in this situations. तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने एक विजुअल एलिमेंट बनाया जिसका बैकग्राउंड कलर किया है ब्लू. अब मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर पास ऑन हो जाए माई स्टाइल, माई बटन स्टाइल में, विदाउट राइटिंग दी सेटअप प्रॉपर्टी अगेन. तो उसके लिए हमने एक कीवर्ड यूज़ किया बेस्ड ऑन. बेस्ड ऑन में हमने पास किया माई स्टाइल एलिमेंट, माई विजुअल एलिमेंट स्टाइल की विच इज़ द स्टैटिक रिसोर्स. हम इसको डायनेमिक नहीं बना सकते हैं. काफ़ी क्लियरली लिखा है, यू कांट यूज़ डायनेमिक रिसोर्स. तो बैकग्राउंड कलर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पास ऑन हो जाएगा. सेम फॉर दी माई स्टाइल, माई एंट्री स्टाइल बेस्ड ऑन हमने पास किया है और बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू रहेगा. ठीक है. The target type value of the base and derived style must be compatible. For the styles to be compatible, they must either have the same target type property or the target type of derived style is descendant of the target type of the base style. Knowledge check. Why would you define a style within a resource dictionary? The resource dictionary makes it easy for a style to target particular UI controls. A resource dictionary make it easy to use the style across multiple controls on the same page. Having style within resource controls resource dictionary is the only way it inherit from a style. Okay, so the resource dictionary makes it easy for a style to target particular UI controls. Okay, so correct answer is a resource dictionary makes it easy to use the style across multiple controls on the same page. Okay, so you can access the values easily by referring to the resource dictionary. So स्टाइल को हम क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि you can access the values easily by referring to the resource dictionaries key. Okay, next unit is create and apply a style. तो क्रिएट कैसे करते हैं, तो अभी हमने क्या किया, कंटेंट पेज डॉट रिसोर्स के अंदर रिसोर्स डिक्शनरी के अंदर हमने एक स्टाइल क्रिएट किया है जिसका की है इन्फो लेवल स्टाइल. ठीक है. अब उसको क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करना है तो क्या करेंगे कि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लेबल लिया. लेबल के अंदर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल इज इक्वल टू स्टैटिक रिसोर्स इन्फो लेवल स्टाइल. एक और चीज़, अब इन्फो लेवल स्टाइल लेबल तो लिखा है, सेटर में हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं. पहला तरीका है कि प्रॉपर्टी हमने फॉन्ट साइज यूज़ किया है. इसमें हम वैल्यू इज इक्वल टू कभी भी हार्ड कोड नहीं पास करना है. ये वैल्यू विल बी कैप्चर फ्रॉम दी अगेन स्टैटिक रिसोर्स, वहाँ से आना चाहिए. तो ये फॉन्ट साइज किस का है, किस क्यों लिया है, क्या है, वो आप मीनिंगफुल वर्ड दीजिए. यहाँ पे फॉन्ट एट्रीब्यूट बोल्ड हमने टाइप किया. अब जब भी हम इस स्टाइल को पास करेंगे, लेबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. चेंज द फॉन्ट स्टाइल. ओके, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है. जैसे हमने फॉन्ट साइज़ यहाँ 34 लिया, ऑटोमेटिकली इट विल बी डिस्प्ले 34 फॉर ऑल. यदि मैंने यहाँ पे की डाल दिया, ठीक है, तो सिर्फ पर्टिकुलर की जिसके लिए मैंने एप्लीकेबल किया है टेक्स्ट बिल के लिए, उसी में ये चेंज दिखेगा आपको. ठीक है, इट्स अ थिंग. अप्लाई derived tools. Okay, fine. यूज़ स्टाइल इनहेरिटेंस, तो इसमें क्या है कि एक स्टाइल बनाया, दूसरा स्टाइल बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कई सारी स्टाइल आप बना सकते हो अंडर द रिसोर्स डिक्शनरी. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज क्रिएट एंड यूज़ एप्लीकेशन वाइड रिसोर्सेस. क्रिएट एंड यूज़ एप्लीकेशन वाइड रिसोर्सेस, तो इसमें क्या है,
Defining resources style on the extensible markup language page is a great way to reduce the repeated code. There is a problem though. Those resource and styles are available only on the specific XAML page. Page level resource dictionary aren't sufficient to let you avoid repeated code across the application when you have the multiple pages. In this unit, you see how to share resource and style across all the pages in your .NET MAUI solution. तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपने पेज लेवल पे यदि कोई रिसोर्स बनाया है तो आप दूसरे पेज के लिए दूसरा एरिया हमने पेज लिया इन फ्यूचर, ठीक है, टिप कैलकुलेटर और टिप सॉल्यूशन और बिलिंग टिप मिल समथिंग, तो उसके लिए फिर से आपको नया रिसोर्स लिखना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट करके वही रिसोर्स पास ऑन करना पड़ेगा। तो अब हम चाहते हैं कि इंस्टेंट ऑफ रिपीटिंग वर्क एट द एवरी पेज लेवल, ओके, पेज लेवल से हटाने के लिए हम इसको कहाँ पे डाल देंगे, एक कॉमन क्लास में डाल देंगे जहाँ पे हमें यूनिफॉर्मली ये मिल जाए। वो कॉमन क्लास क्या होगी, ऑब्वियसली रिसोर्स के अंदर स्टाइल में हमें इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है बटन, क्या लेबल भी होगा, कहीं लेबल है, ओके, लेबल लिखा हुआ है। यदि मैंने इस लेबल को की नाम दे दिया या ये लेबल में टेक्स्ट कलर पहले से लिखा है, इसको हम कर देते हैं 30। ये देखिए ये अपने आप बढ़ गया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये अप्लाई है सभी में, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर को ले देते हैं रेड, तो ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया सबका। सो दिस इज़ कॉमन फॉर अक्रॉस द पेज। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इस स्टाइल को रिसोर्स के अंदर स्टाइल्स के अंदर स्टाइल डॉट XAML में लिख देना है एंड यू हैव टू कॉल अंडर दिस XAML.cs, XAML पेज में कॉल कर देना है, उस की को पास कर देना है। सो वेयर द रिसोर्स डिक्शनरी आर अवेलेबल, तो सबसे पहली चीज़ विजुअल एलिमेंट क्लास डिफाइंस द रिसोर्स, ओके, control pages layouts inherit from the visual element, so all have a resource property that can hold resource dictionary. The diagram shows much simplified depictions of how the items and applications are organized. In this diagram, the terms views refers to singleton control such as button and label that doesn't act as a container for any child controls. Also, the term layout implies a container that is responsible for organizing the layout of its child control. A layout can be nested. For example, grid controls could be held within a stack layout control. तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर पेज के अंदर लेआउट, लेआउट के अंदर व्यू है। हाउ टू डिफाइन एप्लीकेशन लेवल रिसोर्सेज एंड स्टाइल्स। You define application level resources and style in the XAML for file associated with your application class, okay. So application dot resources उसके अंदर होता है color and then key and blue. How .NET MAUI locates a resource or style. Suppose you apply a resource to one of your controls as shown below, okay. .NET MAUI needs to locate the definition of that resource so it can apply to the value. A single application can have many dictionary. Which dictionary will .NET MAUI search and in which order? To answer this question, it helps to think of visual element instance of the pages as forming a tree-like structure. The application is at the root with the pages, layouts, views spreading out below it. This structure is often called a visual tree. Each element in a tree can have its own dictionary. They can contain resources. The style search algorithm in .NET MAUI walks up the visual tree. Okay, begin the search with the dictionary in the visual element instance to which the resource is applied. In the previous example, the search starts with the label type. If there is no resource dictionary or if it has a dictionary but a resource does not exist, then search moves on. Move to the parent of the control and repeat the search. Typically the next place to search this layout. Okay. Check the parents of the layout.
Typically the next place to search is the page. Although if a layout is nested inside the another layout, such as create within a stack layout, then the search will move up the tree to the parent's layout. Look in the dictionary for the application class. The search returns the first item found with the matching key values. The following image summarizes the resource lookup sequence. Okay, application के अंदर page के अंदर होता है layout के अंदर view. So in the practice, most developers ignore resources property in view and layouts. They use the page level dictionary for things they use in single page. Resource and style they want to share across multiple pages are defined at the application level. The lookup process then needs to check only two dictionaries, the one in the current page instance and one in the application. If a resource with a specified key is not found, the app uses default values for the styling. Duplicate keys. Each resource dictionary instance is independent, which means that the same key value can be used in more than one dictionary. Having the same key identifier in multiple dictionary on the search part does not cause an error. The resource associated with the first matching key value on the path is one used. For example, suppose you have the following resource defined in applications. Application.resource x string x colon key message 2. Okay, then you define the following resource in content page and apply it to the label. Okay, because the first matching key values is used, the text property is set to 1. Okay, okay, तो इसको समझते हैं. यदि name is common, key is duplicate, value is different, and we consume same key into the label, what happen in this case? Because the first matching key values is used, the text property is set to 1. Okay, तो वो 1 को सेट करेगी. Okay, next unit is use application wide resources. The goal of this exercise is to make resource available across multiple pages in your .NET multi-platform app UI applications by moving them to a resource dictionary in the tip calculator application class. This exercise is a continuation of the previous exercise. Either you either user either use you existing solution as the starting point of these steps. Okay, so verifying page level resources. What is page level resources? तो हमें क्या करना है कि एक लेबल दिया है जिसमें की डाला है एक्स नेम टेक्स्ट एंड स्टाइल यूज़ किया इन्फो लेबल स्टाइल. क्रिएट अ डिक्शनरी एट द एप्लीकेशन लेवल जब भी हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? ऐप.xaml की, ऐप.xaml.cs की. ठीक है, तो एप्लीकेशन लेवल पे हमें क्या करना है? डिक्शनरी बनाना है. So application dot resource under resource dictionary, then resource dictionary dot merged dictionaries. उसके अंदर में हमने सेट किया है resource dictionary source resource style colors and styles. ठीक है, अब क्या करेंगे? पेज को ओपन करेंगे, कौन सा? स्टैंडर्ड टिप पेज, और उसके अंदर में ऐप डॉट रिसोर्स जो हमने कलर वलर जो कुछ भी लिखा है उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, एंड रन द एप्लीकेशन, वही यूज़ हो जाएगा. ठीक है, बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है.
सिर्फ आपने कलर्स और इसको लिख दिया। कलर्स के अंदर में जाके आप कलर्स को सेट करेंगे एंड रिसोर्स के अंदर में जाके स्टाइल्स के अंदर में जाके आप स्टाइल को सेट करेंगे एंड कॉल अक्रॉस दी एप्लीकेशन। ज़्यादा इशू नहीं। तो रिसोर्स क्या है? यू क्रिएट a symbolic constant for size and colors. Style, you define a look for a control by using a group of properties values. Correct? That's all about the design consistent .NET MAUI XAML pages by using shared resources. अभी नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है MAUI। फिर उसके बाद हम करेंगे रैंडम पिक करेंगे एक एप्लीकेशन, उसको R&D करेंगे, उस पर एज कंडीशन फाइंड आउट करेंगे और काफ़ी सारी नई सी चीज़ें सीखेंगे .NET MAUI में क्या हम बेटर कर सकते हैं। okay. तो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट मल्टी पेज .NET MAUI एप्स विद टैब एंड फ्लाई आउट नेविगेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, comments me if you want something else, or if you want to, if I want to improve myself in the videos, tell me those comment as well. I'll welcome all kind of comments. So for now, thank you, take care.